Hello everyone, welcome back to our channel Startup Lanes. I am Ganeshwari Agarwal and I am conducting a series of interviews with the CEOs and founders of several innovative startups in India. In today's interview, I will be talking to Mr. Ayush Kejriwal. He is the director of Westdoc Stream Zone Private Limited. So, what is Westdoc? Westdoc is a transactional based video streaming OTT platform for the common content creators with the premium content. It is a new and very interesting concept, so let's get ahead and know more about it. Good evening, sir. I am Ganeshwari Agrawal from Startup Lanes, and we are very grateful to have you on board with us. I would like to request you to please introduce yourself to our viewers. Yeah, thank you, Ganeshwari. First of all, I would like to thank Shishir Gupta sir and Startup Lanes for providing me this opportunity to showcase my startup idea on this platform. So, my name is Ayush Kejriwal. I have done my graduation from IIT ISM Dhanbad in the year 2016 in the field of mechanical engineering. I am born and brought up in Dhanbad itself. Moreover, I like to play basketball and also I like paintings. I always had a natural curiosity regarding the entrepreneurship and the business. So I have done some courses regarding those things in the last 5 years. And also I'm having a great interest in the coding, which I grew up in the past recent times. And also I'm a freelancer developer. So all the backends using the Python method I used to deploy. Thank you. This is all about me. So, how did you come up with the idea of this startup? Yeah, just I want to brief a little thing. Just say in 2020 December, I just took a Twitter survey, regarding the OTT platform. So I found that the 86% of the content creators, they are having some problem. Problem in the sense कि उन्हें continuously videos को upload करना होता है और उनका जो payment module है वो पूरा का पूरा आपका base होता है on the advertisement module. So on the basis of that, I came up with this idea of launching an OTT platform for the common content creators. So, what was the most difficult part in the early stages of the company's growth? Ma'am, I would like to say that we are in the early stages right now और हमें ग्रोथ में अभी काफ़ी दिक्कतें हो रही है बट हम लोग उसे ओवरकम करते हुए क्योंकि दिसंबर में हमारे पास थॉट था बट आज हमारे पास प्लेटफॉर्म में एक टीम है सो आई वुड से दैट इट इज़ क्वाइट अ गुड ग्रोथ फॉर अस और सेकेंडली जो मेन हमारी इनिशियल फेज में और अभी भी दिक्कत है वो है फंडिंग की डेफिनेटली विदाउट द फंड्स वी कैन नॉट गो एनीवेयर एल्स सो जितना हमसे बन पाया हमारे टैलेंट के थ्रू या हमारे रिसोर्सेज के थ्रू हमने एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया है एक टीम को कंबाइन की है और टीम को फॉर्म करना एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग होता है कि आप कौन से सही पर्सन को टीम में ले सही डेजिग्नेशन को टीम में ले तो ये सब हमारी कुछ कुछ दिक्कतें थी अदरवाइज स्केलिंग इज वेरी गुड एंड वी आर प्रोग्रेसिंग वेरी नाइस What was the gap in the market that you identified? मैम मार्केट में मैंने एक पोटेंशियल देखा ओटीटी मार्केट का सो एज बीइंग अ क्यूरियोसिटी एंटरप्रेन्योर मेरे अंदर ये हमेशा से एक थिंकिंग था कि हाउ कैन वी एक्सप्लोर दिस मार्केट and what is the gap between the market and the content creators. So basically if a content creator is there who is having a very good very prime video content but उन्हें सिर्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जहाँ पे वो वीडियो मॉड्यूल को अपना अपलोड करके सिर्फ एडवर्टीजमेंट के बेसिस पे रेवेन्यू कमा सकते हैं तो सबको ये रेवेन्यू सिस्टम जो ओटीटी प्लेटफॉर्म का था वो बहुत अट्रैक्ट करता था जो कि वॉच टाइम बेसिस पे था तो हम लोग ने भी एक ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का डिसाइड किया बट इट विल बी ओनली फॉर द कॉमन कंटेंट क्रिएटर इन द सेंस की whoever normal. We are not going to the big production houses or any big media person. Just the common content creator who can upload with the prime content on a platform. Sir, can you please explain your business model? Yeah, definitely. So basically my business model contains the 6 key areas. I would just explain like first it is a video streaming platform for common content creators with the prime content. So my word this prime it specifies a lot of things. Like the videos which is going to be uploaded on the OTT platform, it is going to be segregated and selected by the admin itself. It is up to the par, it should be up to the par. Secondly, we are providing a platform for the business owners and the entrepreneurs to showcase their advertisement so that they can enhance their business. So हमारे प्लेटफॉर्म में बहुत ही सिंपलिस्टिक मॉड्यूल एक बैनर ऐड चलेगा और वीडियो ऐड चलेगा जो कि कस्टमाइज रहेगा कंप्लीटली थर्ड मैम हम लोग एनजीओ के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं जिसमें हमारा एक पोर्शन उनके पास जाएगा डोनेट होगा फोर्थ ईच एंड एवरीथिंग जो है वो एडमिन कंट्रोल करेंगे
फिफ्थ, हम लोग कस्टमर इन्हांसमेंट के लिए 2 स्पेसिफिक मॉड्यूल, एक एक्सप्लोर सेक्शन लेकर के आए हैं और एक रिवॉर्ड सिस्टम लेकर के आए हैं, जिसमें कस्टमर इंटरेक्शन जो है हमारे प्लेटफॉर्म के साथ कंटिन्यूसली बना रहेगा। एंड फिफ्थ है कि मैम जो भी कंटेंट अपलोड होता है, यहाँ पे कस्टमर को या तो कंप्लीट सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, बट हमारे मॉड्यूल में उन्हें फ्री या पेड का ऑप्शन रहेगा। अगर वो कोई पार्टिकुलर एक कंटेंट के लिए पे करना चाहते हैं तो वो भी पे कर सकते हैं। So these are the 6 modules of my business model. That's a great concept, I must say. So, sir, I would like to ask, what are the products and services that you offer? Ma'am, as the services, as I've told you, it is an OTT platform for video streaming. अब initially, मैम, हम लोग यहाँ पर 6 genres को capture करेंगे. 6 genres in the sense की movies, web series, documentaries, music, spirituality एंड कोर्सेज। यहाँ पे मूवीज के लिए हम लोग कोई बिग प्रोडक्शन हाउसेस नहीं जाएंगे, एक रीजनल प्रोडक्शन हाउसेस होती है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि बंगाली मूवीज के प्रोडक्शन हाउसेस हो सकती है, उड़िया मूवी के प्रोडक्शन हाउसेस हो सकती है, तो जो भी स्टेट वाइज रीजनल प्रोडक्शन हाउसेस हो सकती है, या फिर बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देखते ही होंगे, उनका कंटेंट बहुत एज पार रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है, तो हम लोग उनको अप्रोच करके अपने प्लेटफॉर्म पे लाने का ट्राई करेंगे। और अप्रोच चल रही है, काफी डायरेक्टर्स के साथ बात भी हो रही है, क्योंकि मैम अभी कोविड के सिचुएशन में आप जान रहे हैं कि कोई भी थिएटर्स खुले नहीं है, तो जो रीजनल मूवीज है सब होल्ड पे, और सबको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए, क्योंकि जो बड़े प्लेटफॉर्म्स है, जो बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, दे आर ओनिंग देयर ओन प्रोडक्शन हाउसेस, दे डजंट गिव चांस टू द लोकल और द रीजनल प्रोडक्शन हाउसेस. So this is the gap also. I would like to state that we are going to aim for those production houses who are not getting the chance to showcase their talent. And if they showcase their talent, they just have to base upon the ad module which is going to run on their video content, but not on the basis of watch time, जो कि एक OTT प्लेटफॉर्म का रेवेन्यू सोर्स होता है. एंड सेकेंडली, एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोग प्रोवाइड करेंगे एडवर्टीजमेंट के लिए. जो ब्रांड्स हो गए या फिर बड़े बड़े कंपनीज हो गए, वो वहाँ पे अपना बैनर एड्स, जैसे फ्लिपकार्ट या अमेजन, वो अपने बैनर एड्स चला सकते हैं, वीडियो एड्स चला सकते हैं. बहुत सिंपलिस्टिक मॉड्यूल है, इट इज़ नॉट वेरी मच टिपिकल, सो डेफिनेटली आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बूम, और बहुत ही अच्छा हमें रिस्पॉन्स भी मिल रहा है. थर्डली, जो NGOs के साथ हमने कोलैबोरेट किया है, उनका भी रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है. तो ये हमारा एक मॉड्यूल है, बिजनेस का कॉन्सेप्ट है. इसके अलावा एक एक्सप्लोर सेक्शन हम लोग स्पेसिफिक रखे हैं. वो एक्सप्लोर सेक्शन जो है वो कस्टमर इन्हांसमेंट को और इंक्रीज कर देगा, एंड दैट इज फॉर श्योर दिस एक्सप्लोर सेक्शन इज टिल नाउ नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ द अदर OTT platforms. My next question is, who are your targeted customers? Ma'am, before explaining my targeted customer, I would just like to describe you about the market. For example, the OTT platform, according to IBEF, it is going to be a $5 billion market by the end of 2025. So the market is very huge. I would say very huge. And by the end of 2023, the streaming users are going to be 923 million users. And these data are freely available on the internet. We can see the market area. It is so much having such a huge potential. And thirdly, ma'am, the genres which we are trying to capture, it consists of all the age group, I would say, from 13 plus up to age of 65, 70, because the spirituality part, it is generally for the elders, and the movies and the documentaries, it is for the, I would say, the new gaps, means middle age, from 20 to 40 years. So basically, we're capturing each and every customers also, and the market is very much huge. Potential is very huge. Just we have to explore it. So, sir, why would your customers choose your product or service? Why would they order it again? Yeah. Ma'am, आज हम लोग कोई भी OTT प्लेटफॉर्म पे जब कोई कंटेंट आती, then definitely we eagerly wait what content it is going to relaunch again. So, and other platforms, I would not say the OTT platform, the other platform which are available, which is freely available, and the users spend time a lot on there. Over there, the market is totally insaturated, and there are few videos which is not up to the margin, which they are below average videos. But in our platform, the videos which are going to be uploaded, I would say it would be within in a 1 year target, we are taking 100 videos. हम लोग एक साल में 100 वीडियो ही अपलोड करेंगे, बट वो 100 वीडियो उस लेवल का होगा जिसके लिए कस्टमर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे आएंगे भी और विलिंगनेस के थ्रू पे भी करेंगे. हम लोग सबको अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे कि ओके यू कैन कम ऑन द प्लेटफॉर्म, यू कैन पे फॉर इट, नथिंग लाइक दैट.
So this is the thing I would say that customer is definitely going to like, because they know, okay, this is a platform, I would get something good content on this platform. What are the three unique things that makes you better from your competitors? Yeah, definitely. I would say that in the OTT platform, there is a lot of competitors around us. But ma'am, जो तीन key features I would like to state is that saturation. In the common platform where the common content creators can upload their contents, वो पूरा saturate हो चुका है और उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने एडवर्टीजमेंट पे ही उन्हें फोकस करना होता है रेवेन्यू के लिए। मीन्स वो अगर कंटिन्यूसली वीडियोस डालते हैं, सो आफ्टर 6 to 7 months उसके बाद जब उनका ट्रैफिक जनरेट होता है, फिर उस पर एडवर्टीजमेंट चलती, तब उनके पास कंटेंट्स आती है। सेकेंड, the big OTT platform doesn't give chance to the local content creators or the small production houses. And third, payment only on the base of a particular content. अगर किसी को एक कंटेंट पार्टिकुलर देखना है तो उसे पूरे मंथ का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होगा। वो एक पार्टिकुलर कंटेंट के लिए वेरी स्मॉल अमाउंट, वेदर इट इज 5 रुपीज 10 रुपीज, जो भी कंटेंट क्रिएटर सेट करता है, तो वो पे करके वो पे कंटेंट को एंजॉय कर सकते हैं। सो आई वुड से दैट दीज आर द थ्री मेजर थिंग्स which make us differ from our competitors. And also our explore section, which I would definitely like to mention, because that section is going to somewhat very much unique. Sir, why should a job applicant will work with you? First of all, I would just like to say that startup के ideas जो है हमारे पास हमेशा से आते हैं, but उनको convert करना, उनको एक product में या service में convert करना, it is very much tough. जैसे मेरे दिमाग में आइडिया आया, बट आफ्टर 6 months आई हैव कन्वर्टेड दिस इनटू अ प्लेटफॉर्म, और ये प्लेटफॉर्म को क्रिएट करने के लिए एक टीम की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रेजेंटली हमारे पास जो वर्किंग स्ट्रेंथ है इट इज़ ऑफ 30, जिसमें से 15 जो है वो फुल टाइम काम करते हैं हमारे साथ। एंड द एनवायरनमेंट विच यू प्रोवाइड, इट इज़ टोटली फ्री, फ्लेक्सिबल आवर्स, and they can explore the things. We doesn't consider the mistakes, because after doing the mistakes only we are going to learn from it. So the job applicants which are with us, although the pay is less, but they are with us since last 6 months. So I would say it is a great opportunity, and definitely if they will continue with us, they are going to grow a lot. So if it wasn't your company, what you would be doing right now? If I would not be working in this company, then I would say that there are two possibilities. I would be the employee of this company, because this company has got a huge potential and there is a huge chance of my growth because it is in the initial stage. अगर मैं इस कंपनी को एज ए एम्प्लॉय बन करके इसमें 100% देता हूँ, तो मेरे स्केलिंग बहुत ही हाई लेवल पे होती है। और अगर ये कंपनी मेरी नहीं होती या मेरा आइडिया भी नहीं होता, then definitely I would be doing coding right now, because that is my best thing of earning. And I love coding. I love developing the websites and applications. So presently I have also deployed few of the projects, but I would always, if this company is there and I would have been the employee of this company, I would consider myself in this company for a long run. So sir, what are the products and services you constantly require for your business? Madam, the most important thing I would like to say is that a team, because the formation of my team is very great. Secondly, the creators, the content creators, the content which is being uploaded, it is the product. If that content is up to the mark, it is likable by the audience, then definitely this is what our final aim. Third, I would say the brands, they would like the ad module which is going to be promoted on the website or the application. And the explore section is there, where the customers, where the audience can interact directly with their audience, with their content creators, favorite content creators. There is no restriction. So if a particular content creator is there, although he is very much famous and all, but the audience can definitely connect with them directly. So I would say these are the main things, and the funding most of all, because we definitely require it and we are applying, and most of the angel investors are willing to invest. Sir, on which parameters do you select your vendors and suppliers? Is it price, quality, or convenience? No, I would say that it is totally quality, only solely based on the quality. If you have the quality, if you have a passion of creating a content which is very much prime, whether it is a web series, right now we can see a lot of OTT platforms in which there are web series or small movies or documentaries which are getting posted on regular basis, and they are such a great web series. I would say such a great, means they are just
overcoming the web series which are made from the big production houses. I'm not naming any name, but ऐसा सिनेरियो हम लोग देखते हैं. तो हमारा मेन जो सोल है कि क्वालिटी, वी विल नेवर कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी. जो कंटेंट अपलोड होगी वो एक पार्टिकुलर नीश को बिलोंग करेगी, और उनका जो क्वालिटी है, क्वालिटी इन द सेंस की जो प्रोडक्ट वैल्यू है, जो कस्टमर्स लाइकेबल है, इट शुड बी वेरी मच ग्रेट. What are your recent and short-term plans? Ma'am, as my company goes with the name of Westdoc, in Westdoc we are having a monthly goal, weekly goal, quarterly goal and the yearly goal. और हमारा जो मंथली गोल होता है कि कंटेंट क्रिएटर्स कितने इस मंथ में हमें ऐड करने हैं, कितना हमारा ऑडियंस आना चाहिए. क्वार्टरली गोल में हमारे फंडिंग रिलेटेड रहते हैं कि डेफिनेटली वी वांट द फंडिंग विद इन दिस मंथ बिकॉज वी हैव टू ग्रो इन द इनिशियल स्टेज. इन द लेटर कोर्स ऑफ द टाइम, अभी 1 साल 2 साल के बाद हमें और जॉनर्स को ऐड करना है, इसमें पॉडकास्ट आएंगे. सो we have to become a biggest OTT. Our aim is to become the biggest OTT platform in India, which is for the common content creator, and it has the potentially of becoming a unicorn in the near future. So definitely this is our big term goal for becoming a unicorn, and for that we have to go step by step. So we are taking a very small I would say goals which we are fulfilling with the help of my team. So are you raising external funds or are willing to raise fund in near future? Yeah, definitely, because the OTT platform, the Westdoc OTT platform, it is totally fund driven. Because कंटिन्यूसली इसे चलाने के लिए हमें एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ टीम चाहिए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए जो कंटिन्यूसली मेंटेन हो, और ये सेल्फ ड्रिवन नहीं हो सकता है. इसके लिए मुझे एक्सटर्नल फंड्स डेफिनेटली चाहिए. इनिशियली हमें एक फंडिंग, सीड फंडिंग में बोलूँ तो मुझे हमें मिला है, जिसके थ्रू हम लोग ने इस आइडिया को आगे बढ़ाया है. बट अब हमें रिक्वायर्ड है कि कहीं एक्सटर्नल एंजल इन्वेस्टर्स यहाँ पे आए, वेंचर कैपिटलिस्ट आए, जिनको ये आइडिया काफी अच्छा लगे और वो इसमें हमारे साथ जुड़ करके इस प्लेटफॉर्म को और आगे तक लेकर जाए. So definitely we are willing for the investment. Sir, what are your feedbacks for Startup Lanes? Definitely. Startup Lanes, I have gone through the website, I have gone through everything. Before this also I have heard for the name of the Startup Lanes when I was running my previous startup. And especially Shishir Gupta, I am following him in LinkedIn also from quite a long time. Startup Lanes is one of the, I would say, India's growing platform for the startups to showcase their talent, for getting the funding, for getting recognized. So I would say it is an initial step if you are getting selected in the Startup Lanes for a video interview or for whatever journalist. So it would be a very much great opportunity. I am considering this as a great opportunity. Interaction with you, both the guys are totally tremendous. So I'm definitely liking this interview and hoping I could get more benefits from the Startup Lanes in the near future. Thank you so much for your great words and for your time. It was really nice talking to you. Thank you.